DHO रागा. DHO रागा. DHO रागा. Yes, sir. Yes, come. DHO रागा. Yeah. This is the first time you are present in the hearing, and this is the fifth hearing, and that's why I have to write to the Secretary Horticulture to initiate disciplinary action against you. Now, tell me, have you received the Form A of the appellant? Sir, I'm newly posted at Raga. Newly posted means when you took charge. May. May 2025. May, June, July, August, September, October. 6 months is not newly posted. 15 days or 7 days would be called newly posted. 6 months is a long time for an officer to know what are the things going on in his office, or what are the liabilities that you have. When a court summons you, you are under liability to attend the summons, and then RTI Act clearly states that whenever an application is here submitted to your office, you have to provide the information within 1 month, that is 30 days, or if those informations are exempted under the RTI Act, you have to write back to the appellant or applicant stating that these informations are exempted and we cannot provide. Or if the application or the appellant request makes for too voluminous information, also you have to write back to him stating the reasons why you can't be giving him the information on time. And 6 months is quite a long time in the office. आपको अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? यूसी आप आपने मांगा है कामले डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कार्डमम बागान हुआ है उसका यूसी, फोटोग्राफ और जियोटेक कॉपीज ना, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, हाँ, सैंक्शन ऑर्डर और वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, चेक रिसिप्ट कॉपीज, फोटोग्राफ्स ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स और गाइडलाइन कॉपीज 2015 टू टिल डेट. ये आज तक हियरिंग नहीं हो पाया है बिकॉज डीएचओ डिडंट कम. डीएचओ आता तो फर्स्ट हियरिंग में ही हम लोग या तो सेकेंड हियरिंग में इसको सुन के इसका we could have ascertained the veracity of the application itself. Now we have now आज today only first time both parties are here. आपका जो 2015 से 2024 तक का जो मांगा है that is almost 9 years of information that you are asking. ऐसा आप लोग नहीं मांगना चाहिए कि क्योंकि जैसे अभी ये बोला इन्होंने 6 महीना हुआ चार्ज देके, तो आगे का जितना भी रिकॉर्ड्स है he should be having it in his office. That's well understood. He has to have the records. But अब अगर आपका कुछ इंटेंशंस है कि
you have the assumption that there have been commission of corruption in the office. Then ये सर ये पीआईओ उसमें जिम्मेदार नहीं है ना, पहले अगला वाला जिम्मेदार हो। तो आपका आप लोग जब भी आरटीआई करता है, आप लोग का इंटेंशन है बेसिकली टू नो द इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप प्रेजेंट वाला स्टेटस को लेने से ठीक होगा। जो अभी 10 साल पीछे ये पीआईओ साहब अभी क्या मालूम होगा इनको भी। एंड सम ऑफ द ऑफिसर्स आई हैव सीन यहाँ पे स्पेशली आप लोग का एरिया में, ये बाकी एरियाज में नहीं, आप लोग का जो निशी एरियाज में कोई कोई ऑफिसर्स लोग है, दे डोंट मेंटेन रिकॉर्ड। वो लोग रिकॉर्ड को गायब कर देता है ना, क्या करता है रिकॉर्ड नहीं है बोलता है। ये चीज को हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से नहीं सुना है। ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, लोअर दिबांग वैली, तवांग, बोमडिला, नामसाई, तेजू, अंजाव, ये ऐसा चीज नहीं सुना है। लेकिन ये जो अभी गुरुंगपुर में सेप्पा, ये सब एरिया में पीआईओ आराम से आके बोलता है सर रिकॉर्ड नहीं है। नाउ व्हेन ए पीआईओ स्टेट्स इन द ओपन कोर्ट दैट रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वी आर हेल्पलेस। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑथराइज नहीं है कि क्यों रिकॉर्ड नहीं है। उसका उसका फिर दूसरा ये में है, फोरम में है उसका जो एक्सरसाइज कर सकेगा। हम लोग तो ओनली व्हेन द पीआईओ सेज कि नहीं है एट द मैक्स, हम लोग आप अगर सेक्शन 18 में फाइल करेगा तो वी कैन इनिशिएट फॉर ए इंक्वायरी, हम लोग इंक्वायरी बैठा सकता है। बट आपका जो सेक्शन 19 में है, अंडर दैट प्रोविजन अगेन दैट इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस। सर मेरा तो ये ऐसे सर ये 2023 का है और ये सर सर जो सर तो नया है जी वो जी सर हम भी मालूम है अभी लगभग 6 महीने से है ना। तो सर मेरा ये जब फाइल करते समय इसमें ये था उत्तर दुबी बोलकर एक मैडम था, जी जी उनको दिया हुआ था। जी तो उसमें सर आप लोग भी अपॉइंट नहीं हुआ था उसमें जी ये कमिश्नर जी में ना। जी तो प्रीवियस जो फॉर्मर जो कमिश्नर वो समय का है। जी सर इसमें देखा गया सर मैंने आपका एज पर आरटीआई गाइडलाइन के मुताबिक जी आपका सर कमिश्नर को भी तो सर कुछ पोस्ट है ना, जी उसी में हमको दिलाना था ना। जी तो उसी में भी दिलाया नहीं। अभी सर 2023 का अभी 2025 अभी 2 साल जी पूरा हो जी गया, है कि जी नहीं सर? जी तो सर वही है मैंने मेरा अभी लास्ट रिक्वेस्ट है, लंबा लंबा चौड़ा बात करके फायदा नहीं, बाकी उनको भी हियरिंग करना है ना। वही है कि सर अभी नया आया हुआ है ना, सर भी उस दिन हमको फोन किया था, इसलिए हम सर को भी बताया था। आप भी हमको खराब नहीं पाना है, ये मेरा 2023 का केस है ना, जब मैडम हो सर। फिर उसके बाद हुकम सर आ रहा है, कुमरू मतलब ना, वो मेरा अंकल है वो भी आया। फिर वो भी वही बोला है कि ये मैडम समय का है, हम रिपोर्ट ये नहीं हो रही। तो वही हम सर सीधा हम अपील वही करेगा कि सर से मैंने जितना हो सके जितना है उतना हमको दिला दें, लेकिन जितना जितना जो सर का एज पर रिकॉर्ड में जितना है उतना हमको दिला देते वही है। नहीं, हम ऐसे जजमेंट भी दे सकता था इनका एब्सेंस में कि आपको सारा इंफॉर्मेशन दो। तो विद इन 1 मंथ मेरे जजमेंट के बाद में विद इन 1 मंथ नहीं देने से ये डीएचओ साहब फंसता है, वो भी मालूम है। लेकिन जनरली अंडर लॉ द प्रोसीड्यूरल लॉस में क्या है कि वी शुड बी गिविंग ए फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज। इसलिए हमने जजमेंट नहीं दिया। हैड आई गिवन द जजमेंट तो यू आर बाउंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट टू ऑन टाइम एंड on a free of cost basis to him. But आपको सुनना ही करके I have prolonged the hearing, which is actually not good under the act itself. तो अभी आप क्या बोलते हैं, आपके पास में ये सब इंफॉर्मेशन होगा तो ऑफिस में ना? सर ये में 5 अगस्त 2025 में हमको एक दिया था, ये कॉपी नहीं मिला, जी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में हम नहीं मिला, इसलिए हम अटेंड नहीं कर पाए। और सेकंड जो है सर इसमें 30 नवंबर 2023 में शायद ये डीसी वहाँ से डिस्पोज ऑफ वाला केस भी है। और सेकंड और एक तो है कि अगस्त 8 अगस्त 2024 को भी डिस्पोज ऑफ किया गया है जिससे डीसी का उधर में अच्छा वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है, उसका जजमेंट को इफ द appellant is not satisfied or still has certain grievances regarding on that very judgment, तब ये हम लोग के पास आता है। वी आर कॉल्ड द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। डीसी जो आपका डीएचओ का इमीडिएट हायर अप होगा वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। वहाँ का जजमेंट, वहाँ में आपको वो
the first appellate authority can dismiss the appeal or even dispose the appeal. But after the dismissal or the disposal of the appeal by the first appellate authority, if the PIO doesn't provide the information, or if still the appellant feels certain grievances to be addressed, then he has the right to file the second appeal. And यहाँ पे हम लोग अभी सेकेंड अपील का हियरिंग कर रहे हैं. फर्स्ट अपीलेट में तो हियरिंग आप तो गया होगा फर्स्ट अपील. सर उसमें गया था, उसमें भी वही डॉक्यूमेंट दिया नहीं आप। वहाँ दे दो बोल के बोला हाँ, डीसी. दे हाँ दो बोला फिर दिया हाँ नहीं, वही तो वही है, प्रॉब्लम वही है. वही है। डीसी का हम भी डिस्पोज कर सकता है विद एन ऑर्डर ordering you to provide the information to him within a month. ऐसा हम and then I'll dispose it today. But if you don't pay, if you don't provide the information to him within a month, again he will write to us. Then I'll initiate action against you as per your service rules that is given to us. इसलिए अभी आप whatever information you can provide to him वही best होगा. Within सर एज ऑफ नाउ मेरा पास में कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफिस जो है रागा डीएचओ ऑफिस जो है अभी तक फंक्शनल नहीं है, तो कहाँ पे होगा ये सब फाइल? ट्रांजिट कैंप जैसा है, इसलिए हम लोग का सर इवन द सैलरी इज बीइंग प्रिपेयर्ड हियर इन गोवा सेमेस्टरी, इसलिए मेरा ऐसे ही तो होता है आप लोग तो का इधर इसलिए पे. सर थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर इसमें कोई भी बेनिफिशियरी राज कदम का हो जी. गमले डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बेनिफिशियरी हमको नहीं मिला और जारी करके साइन किया, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं होने से आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि उसको केस को डिस्पोज ऑफ करें एंड द नेक्स्ट जो है एनी टाइप ऑफ नहीं नहीं वही तो ही साथ देगा सर। इनको इनको तो मालूम नहीं है ना हुआ द बेनिफिशरीज इन कितना सैंक्शन हुआ कितना नहीं हुआ वो चीज को जानना चाहता है। वो चीज को ये मांग रहा है. आप अभी फाइल नहीं बोल रहे थे तो फिर that is not acceptable. No, how can there be no files in an office of the GH? सर लास्ट 9 इयर्स तो ऐसे ही चल रहा है, इसलिए वो जो है उरुमकू में सेप्पा रादादी सामने ये सब में ऐसे ही सब आके बोलता है फाइल नहीं. और बाकी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऑफिसर ऐसे आके यहाँ फाइल नहीं बोलता है. एक बोला है फाइल नहीं है उसको हम एक्शन दिया है. अभी सुनिए आप ये यूसी मांगा है इन्होंने और जियोटेक और फोटो का कॉपीज मांगा है इन्होंने. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उस स्कीम्स का सैंक्शन ऑर्डर्स को मांगा है. वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉपीज तो वो तो जरूरी भी नहीं है उतना कोई. चेक रिसिप्ट कॉपीज, फर्निश फोटोग्राफ्स ऑफ कंप्लीटेड वर्क कॉपीज, गाइडलाइन कॉपीज. तो अभी ये सब इंफॉर्मेशन में तो एक दो इंफॉर्मेशन तो होता ही होगा. सर इसमें पूरा ओविन इंचार्ज ईएमए 2023 हाँ 8 सितंबर में कोई इंफॉर्मेशन फर्निश किया है सैंक्शन ऑर्डर कॉपी जी, आपको हाँ इसमें तो हमको दिया नहीं है। वो तो अब जो सर जो आप जो बोल रहे हैं पूरा ओबिन वो तो अभी भी है, अभी भी है, वो अभी भी रागा में है उससे। अब उसको भी नहीं लेकिन वो इन रिटर्न दिया हुआ है ना. सर हमको जब मिला नहीं था हम किसे फिर ये एक प्रॉब्लम. आपका एड्रेस ये ठीक है. नहीं, मेरा एड्रेस ठीक है सर, वो तो आता है आपका भी ये हियरिंग ये जो कागज होता केयर है ऑफ जुलांग नियर सोनम नर्सरी. वो ये हाकिम से ओके सर इसको दिया हुआ है हाँ देख रहे हैं हम. 8 सितंबर 2023 हाँ 23 में आप कभी बोलते हैं ये रिपोर्ट नहीं है, कभी हाँ. बोलते हैं हमको दिया हुआ है। नहीं वो पहले वाला डीएचओ एक लेटर तो लिखा है और वो जो इससे आगे वाला इन्होंने भी लिखा है डीसी या सेक्रेटरी को. वो लेटर भी हम पढ़ा है. इन्होंने लिखा है कि आपको ये फर्स्ट एप्लीकेट अथॉरिटी का वो क्लियरिफिकेशन दिया है. अभी इतना इतना पुराना है 23, 24, 25 3 इयर्स रनिंग. अभी उसमें आप एक भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है बोलता है. सर जियोटेक अगर ये एसबीआई में जो भी हम लोग फोटो जियोटेक करता है जी. एसबीआई को ही ऑफिस में फोटो नहीं, क्योंकि वो तो नहीं नहीं वो तो कैसे ऑफिस है.
How there won't be a record in the office? वो ऐसा तो गलत होगा ना आपका। इसको अब लोन पोर्शन है, इसलिए हम लोग नहीं बैंक लोन पर्सन होने से भी तो यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड इन द ऑफिस कि कौन who were those beneficiaries and who were those people those availed the subsidies. तो यहाँ में सब दिया है, जियो टेक फोटोग्राफ्स कॉपीज अवेलेबल इन एसबीआई रागा ब्रांचेस और इसमें कॉपी अभी अभी आपका ये 2023 का अगर नहीं है तो 23, 24, 25 का होगा रिकॉर्ड्स आपके पास में ऑफिस में। आपका ऑफिस कहाँ है पहले वो बताइए। तो अभी फंक्शनिंग कहाँ से कर रहा है? वहाँ में सर एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं, अभी सैलरी जो है जीरो, गोवा सुबनसिरी का डीएचओ का कैशियर बना देता है, हमारे वहाँ कैशियर नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल रिकॉर्ड्स जो है इसमें सर हम आपको सैंक्शन ऑर्डर दे पाएगा, बेनिफिशियल लिस्ट एनक्लोज है, सेंक्शन ऑर्डर ही काफी है, उसके बाद ये उससे बहुत कुछ भी कर सकता है। एक एक तो सिर्फ एक सेंक्शन ऑर्डर सिर्फ को दे दीजिएगा इनको, ठीक है। सेंक्शन ऑर्डर ले लो, बाकी बात तो वो आपका आपका इंटेंशंस क्या है पता नहीं। हम एक सेंक्शन ऑर्डर मिलने के बाद तो आप मेन तो उसका सेंक्शन ऑर्डर हो गया है, अब सेंक्शन तो भी स्टेशन लिखा हुआ शॉर्ट ऐसे कर दीजिए, जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको पहले कि रिक्वायरमेंट दो, बहुत सारा एक कागज जो नहीं है उसके रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड नहीं है, ये तुम लोग अनोइंगली जो है। ये वही है पहले हम बोला है ना, ये कर दीजिए, जो जो ये एप्लीकेंट ने मांगा है उसको आप पीआईओ आप दे दीजिए, जो जो है हाँ हाँ जो जो हाँ नहीं है हाँ उसको भी बता दीजिए, हाँ सब हो जाएगा, कितना लंबा चला कितना जरूरी नहीं है, उनका कागज नहीं होने एक तो अब लोग का इधर में ये गुरु कुएं में एक डीलरसों को नोटिस पे नोटिस देता है, तो बाद में डायरेक्टर शी केम टू मी एंड सेड कि हम लोग का वहाँ पे डीलरसों में एक एलडीसी तो बहुत साल से डीलर चला रहे हैं, एक डीलरसों रेगुलर भेजा है उसको मार पीट के भगा दिया वहां से। ऐसा ऐसा है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो बाकी विथ लाइक नो इंटेंशंस एंड नो ऑफेंस, बट इसमें ऐसे ही है। सर वही है, उधर वो जान उसकी जरूरत होता है, उन लोग का सो रिकॉर्ड में सो होता है, आप ये ये तो ध्यान रखना। आप लोग वो कर the दीजिए, the appellant I can't the appellant but in my part I'm not telling you. the That is appellant present you cannot tell me that. but सर हो जाएगा, you don't need to interfere first thing हो गया है आप हाँ उसको we are hearing you don't need to intervene। We are in that format, right? अब जारी हमको झूठ बोला बोलने से आप आपका नाम लिया है whatever भी लगा सब इंटरफेयर मत जी कीजिए, हम सब पीआईओ ऑनर कोर्ट में हम है नहीं हम आप जारी PIO present अच्छा नहीं है। नहीं, आपको उनका सबका पीआईओ नहीं no no pure business leader in the when the bill is six here अभी that's one हम दे रहे थे, हम दो से on his behalf he is standing, yes तो आप क्यों exactly आएगा नहीं तो आप no you don't have to speak now, he is the party, he is himself, Mr. Palenna is standing here। आप करेक्शन कर लें, no you don't need to correct, you are not his counsel even। जस्ट कंक्लूजन ठीक है हाँ हाँ जो भी हो whatever document is there I am ready to finish it. okay whatever we won't be recording his statement। Heard both the parties, the appellant stated that सर हम लोग भी इस उम्र में यहाँ में खड़ा करने के सिंसियरली हम काम करते हैं, यहाँ में सवाल से तो नहीं आता है इस उम्र में, इसलिए वो जो गड़बड़ हुआ है सर मैंने ऐसे है कि हमको एरिया में आप जो बोले सही है, पीआईओ मैंने पहले जो चला गया वाला पीआईओ जो गलत करता है बाद में जो आने लगा, जैसे कि आप अभी ये हो रहा है तो मैं सही दो दिन ब्याह कमा रहा है, तो अभी मेरा यहाँ में तो दो ये डीएचओ से चेंज हो सिचुएशन वो डायरेक्ट मिलता ही नहीं डॉक्यूमेंट, ये तो ठीक sir your name
TAW. So TAW मांगने से PU किसने ये क्या PIO come GH ini kau kan Raga HON'BLE district. PIO is the this is an application file before is taking charge as the PIO as he has joined the office on May. Sir, can you tell us the date when you joined the office as PIO? May 2025, which date? 23rd May 2025. So, Yes, sorry, excuse me, 22, 22nd. 22nd May 2025. And so he does not fully, he is not fully abreast ABREAST with the Form A itself. Sir, I took charge on the 18th June 2025. I Okay. joined on 22nd May. So I have recorded the joining date. Okay. Right. Just to condone the delay, no, I'm not condone your delay. Um, despite the failure of the previous PIOs, PIOs to furnish the information to the appellant, I undertake to provide those information which are at the office of the PIO and for the rest unavailable information I won't be able to provide to the parent. After hearing both the parties, the Commission observes number one that the PIOs are duty bound to attend to court hearings whenever an appeal is preferred against the PIO and whenever a notice oblique summon for presence in the hearing is given unto the office of the PIO. Next, certain PIOs are of the habit now to simply state that information or records are not available with the office of the PIO, which in fact is not prudent on the part of the PIO as well as on the functioning of the public office, the PIO.
how old the information be. The PIOs should be keeping the record and also maintaining it safely and securely. Next. However, in this instant appeal, the PIO statement in the open court that the office of the PIO itself is not functional for the uh, so you are in a makeshift office. आप लोग तो ऑफिस makeshift वाला है. almost sir. So Okay, well I won't report that anyway. हो जाएगा वो उसको रिकॉर्डिंग करने से. So, and the commission hereby orders उसको क्यों हो जाएगी. Commission hereby orders. Number one, the PIO to provide the information available at his office to the appellant within 1 month from today. Second, for those information that are not available at the office of the PIO, the PIO give it in the form of an affidavit stating that those informations are not available with his office. To ascertain the furnishing of the information by the PIO and the receipt of the information by the appellant, another date of hearing be fixed, wherein column A, the PIO should be present in person or through online mode, failing which necessary action will be initiated against him as per the provisions of RTI Act 2005. B. The appellant to be the appellant to intimate the commission about the receipt of the information from the PIO and to be present in the next date of hearing, failing which this appeal will be heard and determined ex parte. Fix the next date of hearing on March 19 March. 19th 19 March. 10 19th March March 10:30 2023.
आज से 1 महीने के अंदर में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइडिंग those information that are not with you to furnish with duly educated with to him that this information are not value and that request it. And आप इनसे सर से इंफॉर्मेशन को मिलने के बारे में बताइएगा हम लोग को मिल गया तो आप नेक्स्ट हियरिंग को आप दोनों आने का भी नहीं हम लोग को बताने से मार्च मार्च 19 10:30 मार्च तक क्यों जा रहा है मेरा बहुत सारा केसेस है और हम लोग 5 कमिश्नर में एक ही कोर्ट है कंटिन्यूसली और हफ्ते में सिर्फ 2 चांस मिलता है एक कमिश्नर को दैट्स व्हाई इसलिए एक नया कोर्ट हम लोग बन रहा है सो थोड़ा वी कैन स्पीड अप द केसेस सर वही है 1 महीना में सारा अगर दे देता है हम एक सप्ताह में थ्रू आउट करके आपको हम ये करते हैं जी जी आइए दोस्त इंफॉर्मेशन और इसमें एड्रेस में भी देगा लेकिन आपको पर्सनली कॉल करेगा और या सर इसकी फाइल यस नाबम Kapak versus Executive Engineer RWD Poma Division. नाबम Kapak. PIO ऑनलाइन नहीं है PIO तो लास्ट टाइम भी एब्सेंट था गंबो सर से आया ना हम लोग को यस अभी तक तो पढ़े नहीं बेच सकते एक एक वार्निंग समन्स भेजता है एज पर द प्रोसीजर ना पहले तो समन हमें भेजा है पहले सामने बजा हाँ अब एक वार्निंग समन्स भेजिएगा वार्निंग समन्स नहीं आने से I'll send no available warrant of arrest against the executive engineer. हमें वो लोग को नोटिस मिलता है कि नहीं मिलता है अभी इसको कुछ H1 में देने से दिखता है लेकिन एक्शन with the book the PIO absent for the consecutive second time despite notice of hearing and to the PIO on 5th August 2025. Third, Excellent stated that information had not been provided to him by the PIO. आपका जब फर्स्ट एग्जिट अथॉरिटी में आप हियरिंग में गया था हियरिंग नहीं कर पाए वो लोग नहीं करवाया तो लोग करता है इसके नाम बहुत कम लोग करते हैं despite filing of birth before the birth authority. हाँ कौन है इसका इससे जो एसपी का एड्रेस कैसा होगा ऐसी जो ये एड्रेस एससी ऑफिस का एड्रेस तो बिहार में ये ऑफिस का नाम पर नहीं उधर में एक है और एक्टिव न्यू शिफ्टिंग हुआ है वो जो डीएन कॉलेज एंट्री अपोजिट वाला कौन सा में अब उसका ऑफिस होगा क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा ना उसको लिखने से भी हो जाएगा बीजेपी ऑफिस पे है वेस्टर्न जोन है एस
SHRW, SHRWD, सर ये वाला यार RWC, Rural Work Circle. ये उन लोग एग्जाम मार्क Rural SC, Rural Work Circle, ईटानगर, वेस्टर्न जोन लिखता है। वह तो सिर्फ वो ये बस ऐसे ही है, वो वेस्टर्न जोन ये उन लोग का ऑफिस का है did not conduct any hearing. So, सर file this second appeal before the commission. रूरल वर्क सर्कल ईटानगर से On 5th August 25, the PIO was sent summons to appear today for the second hearing. But the PIO was sent without intimation to the commission, the reason for his absence, which is online. In the absence of the PIO, the hearing could not be furthered. FURDHERED, furthered, and the commission hereby ordered number 1 to send warning summons to the PIO come executive engineer. ब्रैकेट में आप ई लगाया है क्यों? ओ ये ओ ऐसे पीछे एक लिखता है वो लोग लिखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्रैकेट में ई कैपिटल ई कैसे जो RWD फॉर्मर डिवीजन यूपीआई डिस्ट्रिक्ट पापुम परे to be present in the next date of hearing without failing which appropriate action shall be initiated against the PIO as per the provisions of RTI Act 2005. Next, the appellant to be present in the next date of hearing, failing which this appeal which we heard and determined ex parte. Notice for the next hearing be sent to the PIU EERWD bracket E former division, and notice need not be sent to the appellant as he is present. Fixed and scheduled hearing on 19 March 2026. बहुत लॉन्ग हो गया हाँ, हम लोग मेरा केस कैसे सब डेट्स में फिक्स है, बीच में 15 डेज का हम लोग का फिर सर ऐसे एक लिख देने हैं उसमें आप सेक्शन को लेटर साथ में लिखने से नेक्स्ट हियरिंग उसमें 19 को होता है हाँ। इन बीच में हम एप्लीकेंट को अगर कुछ कागज दस्तावेज मिलता है तो हमको नहीं वो हम लिखते हैं ऑर्डर में कि फर्निश इंफॉर्मेशन करके लिखते ही है उसमें जो फर्निश इंफॉर्मेशन मांग लेगा पहले भी जाता है वो फर्स्ट कॉलम है ना, ऑर्डर में आपको फर्निश करने के लिए बोला है कि ना, ऑर्डर में होगा आपको मिल जाएगा, ऑर्डर में हम जनरली वो लिखता ही है। पीआईओ आने से हम लोग मालूम करेगा कि वो इंफॉर्मेशन ये नानू आया है हाँ आया नानू DDSC यूपीआई आपको लास्ट टाइम जी जी 167 को देने बोला था आपको, आपका जो फॉर्म ए का 167 आपको दे दिया बोल के इंफॉर्मेशन को जी जो फॉर्म बस में कुछ इसको ऐसे दिया
तो अभी डॉक्यूमेंट सेम था तो इसलिए हम छोड़ दिया। जो चीज पहले जो वन में दिया वो चीज तो ही है तो सर अब इसका पेमेंट डिफरेंस के लिए फिर लिबर्टी आप दे दीजिए फाइलिंग करने के लिए फ्रेश फाइलिंग का हम लोग का तो ऑनगोइंग था अभी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पहले। तो अभी इसको हम लोग डिस्पोज करके आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन हाँ फाइल करने के लिए इसको डिस्पोज कर देगा हम लोग। हाँ उसको डिस्पोज होगा कर दें इसको उसके डिस्पोज बाद कर दो विथ लिबर्टी गिवन टू द एप्लीकेंट और सर टू साइट को भी फाइल। विजिट नहीं, साइट विजिट तो आई कैन नॉट एलो, हम मेरा तरफ से नहीं करते, बाकी कमिश्नर्स करता होगा। आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग हम लोग साइट विजिट करवाओ करके नहीं बोल सकता है। इस एक में पता नहीं वो लोग अदर आपका जैसे कोई कोई लोग बहुत हमको कंप्लेन किया, बाकी लोग तो पहले वो लोग साइट विजिट के लिए लिखता था, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग में आरटीआई एक्ट में साइट विजिट लिखा हुआ है इसमें, लेकिन वो साइट विजिट वर्क को नहीं बोलता है, इंफॉर्मेशन जहां रखा है उस साइट को बोलता है। जैसे आलमीरा हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे रजिस्टर हो गया, उसको विजिट करवाने का अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बाकी लोग कैसे करके अंडरस्टैंडिंग वो लोग अलग अलग ही है, बट जो भी एक हम बीइंग ए एडवोकेट सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, हम पहले डेफिनेशंस को पढ़ता है कोई भी एक्ट का ना, डेफिनेशन में क्या लिखा है क्या बोलता है। तो इस डेफिनेशन में इंफॉर्मेशन में साइट ऑफ फिजिकल वर्क तो नहीं लिखा है, इंफॉर्मेशन सेट दिया है। सो दैट मीन्स द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज माय इंटरप्रिटेशन, इसलिए हम नहीं देता है। बाकी कमिश्नर्स लोग देता होगा, देने दो, ठीक ही है वो लोग का ना, बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग तो आई कैन नॉट ऑर्डर फॉर दैट। बट वट एवर भी आपको हम लोग वो कर देगा लिबर्टी, आप फ्रेश से एक बार फाइल कीजिएगा, क्योंकि अभी सब ये हो गया तो ना। अभी बाकी तो काम हुआ लेकिन वो सर ये फ्रेश फाइलिंग हाँ ये हो जाएगा पेमेंट डिटेल्स। हाँ होगा, आप उसको फाइल कर लीजिए, वो आपका आपका मर्जी है, वो आई कैन नॉट से कि फाइल करो मत करो, बट यू आर गिवन द लिबर्टी। जी, हमची गुमटे वर्सेस ईईआरडब्ल्यूडी जीरो डिवीजन। कोई ऑनलाइन नहीं है ना, कोई भी नहीं है। ओके, हमची गुमटे, ये भी वकील है क्या हमची गुमटे भी? इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ सब एडवोकेट बोल के हर एक ऑफिस में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई फाइल करता है। हम लोग का इज्जत ही खत्म हो रहा है, जो जो वकील लोग ऐसे, कोई बाकी स्टेट में कोई भी वकील इज्जत कोर्ट में ही खड़ा होके देखिए, यहाँ में हर एक ऑफिस में एडवोकेट ही लाइन पे लाइन। अरे व्हाट इज दिस, एक्शन लेना है बाहर एक्चुअली। इट डजंट सो गुड फॉर एन एडवोकेट टू बी फाइलिंग आरटीआई। एक दो ऑफिस में मारो ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन में दिस इज नॉट डन। अच्छा नहीं दिखता है ना। What is the appellant absent consecutively for the second time despite notice for hearing issued to him on फर्स्ट वाला को देखता है 21 March 2025 and on 5th August 2025 it is to be noted that
the appellant in the second notice for the hearing, which was to be held today, it was categorically mentioned that in the consecutive absence of the appellant for the second hearing, this appeal will be heard and determined ex parte. Mm. This the consecutive absence of the appellant implies his non-seriousness of the appeal, despite being the appellant himself, and on top of all, the commission sending him notice for the hearing repeatedly. Next, in the event of the inability to attend the hearing, the appellant and the TIO have bounded duty to intimate the court of the commission beforehand so that the commission is made aware of the reasons for their absence. But in cases just like in the instant appeal, appellant bracket S appellants paying disregard to the notice of the commission undermines the RTI Act itself and the statutory procedures of the commission. In the light of the above facts, the commission hereby dismissed this instant appeal ex parte. Dengya Mama versus EE Basar Division PWD. Mama. Last time the order, after the order, did you receive the information? No, no.
इधर अभी लेके वो अभी देगा both parties both ये parties present but appellant the appellant stated that the last order of the court on 5th August 2005 the information pertaining to serial numbers 1, 2, 4, 7, 8, 9, and 10 for the year 2018-19 was to be provided to the appellant, but the PIO is yet to provide the same. At the PIO stated that the information as ordered by the Commission to provide to the appellant for only one block year, that is 2018-19, is brought today to be handed over to the appellant. The Commission accepted the PIO request and asked him to hand over the information to the appellant and the certificate. एक certificate. ये आज का डेट रिसीप्ट नाम yes 13/11/25 ये राहुल गाजी you can put गाजी उसको देख लीजिएगा अपना you go through hopefully all the information so should be आज हम लोग डिस्पोज कर देता है किसको आपको देखिएगा पहले ना ओके तो the court has given time to the appellant to verify whether the information as provided by the PIO are complete or not. In the light of the above, the Commission hereby orders: number one, the appellant to verify the information and to let the Commission know that she has received the complete information from the PIO on or before the next date of hearing, and to be present on the next date of hearing without fail, failing which the Commission will assume that the information have been provided to her completely and
So we will dispose this appeal. Next, the PIO to be present in the next stage of hearing without fail. Next, I'll fix the next date of hearing on 19th March 2026, 10:30 a.m. 19th March 2026, 10:30 a.m. So इसको हम लोग देखने देगा चिल्ड्रन को कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं, कंप्लीट करके इन्होंने बताने से आपको भी आने का जरूरी नहीं, हम लोग डिस्कस कर देगा। जस्ट इन केस आप पहले हम लोग को देखता है कि सब कंप्लीट है तो सर को भी आप बता दीजिएगा कि आप नहीं आने से भी होगा। यू जस्ट लेट अस नो, वी विल डिस्पोज ऑफ इट। And one more thing, 2019, 19 to 25. हाँ, हाँ। So 2018 to 19. 18 to 19 को ही आप देने बोला है। So next. नेक्स्ट आप एक फ्रेश से आप फाइल कर लीजिएगा, फ्रेश। बट ऑलवेज लेट अस नो दैट आप पहले वाला, आप जैसे अभी सर है, सर का अंदर में कुछ स्कीम्स आया है तो सर ने कुछ करप्शन किया हुआ करके आप प्रिज्यूम कर रहा है, होता है तब ना आप आरटीआई फाइल करता है, नहीं तो कोई फाइल करेगा नहीं। तो सर का समय का ही फाइल करने से ना सर को आप इम्प्लीकेट कर सकेगा। सर का पहले वाला फाइल करने से भी सर कुछ भी नहीं होगा ना। ऑटोमेटिकली नहीं नहीं नहीं, सी प्रिंसिपल रेस्पोंडेंट दैट इज वो एक ये है, मैक्सिम है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आप एक वकील है, शायद कोर्ट में इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेगा ना। डीडीओ कौन था, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उस समय कौन था सर, अभी आए आप उस सर का पेज का साहब है, तो आपका क्या करनामा को तो सर को कैसे फिक्स करेगा, कोई भी कोर्ट फिक्स नहीं करेगा ना। हाँ इस चीज में इस तरह को कुछ नहीं बताया। जी जी जो सर पहले था डिपार्टमेंट का, जी ऑटोमेटिकली उसी को इफेक्ट होगा। हाँ गवर्नमेंट विल टेक, हाँ हाँ उसको कुछ नहीं होगा अगर बाकी हाँ बात से कुछ हाँ किया भी है हाँ नहीं भी किया है, तो गवर्नमेंट विल डिसाइड। यस, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा, कोर्ट्स विल डिसाइड। Wait, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द कोर्ट्स, नो, टोटली डिफरेंट है ना। जुडिशरी इज टोटली डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव इज टोटली डिफरेंट, लेजिस्लेचर इज टोटली डिफरेंट। वो गलत है। जिससे बोला ऑनगोइंग को करने से पहले नहीं, ऑनगोइंग को सर नहीं दे पाएगा, आप ऑनगोइंग को आप नहीं देगा आरटीआई में, ऑनगोइंग वर्क का इंफॉर्मेशन आप नहीं देगा, जो कंप्लीटेड है उसको देगा। वो भी सर जैसे अभी लास्ट ईयर कंप्लीट हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है। 10 साल का वाला तो 19 का ये सब हम इसको बोल रहे हैं, हर एक को बोल रहे हैं कि ऐसे मत करो, बोल रहे हैं हर एक आरटीआई एक्टिविस्ट को ना। उस चीज में ना ऐसे होगा कि आपका टाइम में भले ही काम ना हो, लेकिन उस टाइम में जो इंसान करता उसको आप इनरोल कर सकते हैं या तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं एट दैट टाइम आपका टाइम में काम हुआ है, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ है कहाँ रखा है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये चीज को वो नहीं कर सकता है, देन द पॉसिबल ऑथोरिटीज और मे बी द डिपार्टमेंट्स विल टेक देम। डॉक्यूमेंट्स निकालने में भी जितना पूर्णा उतना तकलीफ होता है। Yes, sir. इसमें इलेक्ट्रॉनिक बना है आपका डिवाइस ही सब गवर्नमेंट पे, ताकि आप हो जाएगा जितना सर। है 19 डॉक्यूमेंट्स को मार्च इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ सेव कर सकते हैं। 19 मार्च 10:30 AM आप ऑनलाइन आप लोग आ जाइए, बाजार से इतना दूर आने का भी नहीं है, हाँ, ऐसे भी कर सकते तो ऑनलाइन में आप लोग आने से आप लोग के लिए सुविधा है। बट आपका कोई उस दिन कुछ काम होगा तो आप आ गया, वो बात अलग है, साइन कर लीजिएगा। हैं। इसमें तो डीडीएससी दापोरिजो नहीं आएगा नहीं है, एक वार्निंग समन्स ले लो उसको। अभी इसको क्या है ना, अभी इसको होगा ये बंद करे क्या, ये अभी बसर हुआ बस आगे चल रहा है। ये हाँ, बंद अभी आगे चलेगा अभी ये हाँ, okay।